Hey guys, welcome back to my channel. So here I am with brand new content on my channel. So this lockdown has been so stressful for all of us now, and I feel like to ये stress को कम करने के लिए we have to do something like कुछ hobby होती है ना, like someone like gardening and someone like art and craft. I like to do DIY stuff, and it feels me like I'm into it. When I saw a particular product, मेरे दिमाग में आता है लेट्स डू दिस, इससे तो ये बन सकता है, इससे तो यस। आज की वीडियो पे मैं आज बताने वाली हूँ आपको हाउ टू मेक दैट शेल ईयरिंग्स। यस, यू हर्ड इट राइट, आज हम शेल वाली ईयरिंग्स बनाने वाले हैं। एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, सो मेरे पास जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें सामान घर पे रखी हुई थी, मैं वही सामान यूज़ करूँगी, एडजस्ट करूँगी। आई मीन सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रियली एक्साइटेड। For the DIY shell earrings, we need some shells, one pair of hoops and Fevikwik. Yes, we only need these three stuffs for our DIY, and ये सब चीज़ें तो हर घर पे मिल ही जाती है। So I have these numbers of shells with me, and because of this lockdown we are not able to go out, so I'm gonna adjust it जो भी है मेरे पास उससे। Now हमारे पास जो shells होता है ना, वो ऐसा नहीं होता, you know what I mean? We have to make it like this. So shells के पीछे का part cut out करने के लिए we have to rub it those shells on a rough surface, and after rubbing it for 2 to 3 minutes we'll get our desired shell shape. Here it is. We have everything with us, so let's start making. Firstly, take your hoops and add Fevikwik to it, जैसा मैं लगा रही हूँ। And after applying Fevikwik, आपको wait नहीं करना है, just quickly apply that shells on the hoops, and मैंने जहाँ से cut out किया है वो वाला portion stick करूँगी। एंड when you stick the shells to the hoops, make sure कि आप उसे 30 seconds तक stick करे रहें for the better results. अब मैं ऐसे ही next shells भी लगाऊंगी। So मैं distance रख रही हूँ because ज़्यादा shells नहीं है, but if you have more shells then आपको distance पे stick करने की ज़रूरत नहीं है। It took me 5 minutes to do this and it's really easy, but be careful आपके हाथों में Fevikwik ना लग जाए। Now when I think about jewelry, it feels really good, और जब बात हो DIY jewelry की, it makes me excited as well. Now मेरा एक hoop बन चुका है, and ये बहुत ही ज़्यादा easily बन गया in effortless way. So I saw these kind of earrings weared by many bloggers, and I also wanted to buy it but couldn't find it. And जब मिला तब lockdown start हो चुका था. Then I realized I can make it too. So मैंने घर से खोज के चीज़ें निकाला and start हो गई बनाने के लिए। एंड डोंट वरी, आपसे ये जल्दी नहीं बन पा रहा है तो टेक योर टाइम ड्यूरिंग स्टिकिंग, बिकॉज स्टिक होना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So I added 5 shells for each hoops, and after sticking the shells our earrings looks like this, and I'm absolutely happy with the outcome. जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना है, एंड इट्स टाइम टू वियर दीज इयररिंग्स। वाओ, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। कोई बोल भी नहीं सकता दैट ये DIY है। Jewelry, look at the earrings. It just gave me that summer वाला vibe, and I'm really loving it because जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही earrings बन के निकला है। But yeah, of course थोड़ी सी shells की कमी थी, because यहाँ पे जो थोड़े बहुत गैप दिख रहे हैं आपको, थोड़े hoops के जो गैप्स दिख रहे हैं ना, वो fill नहीं हो पाया because I didn't have that much of shell with me. But yeah, it's okay, and if you have enough shells with you then you can fill up the gaps as well. And if you want to do as simple as that, just do this. I just used only 5 shells for one hoops, and this is just took me around 5 to 10 minutes to attach to make this DIY earrings, and I'm loving it. I hope आपको आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाए इस बार का, बिकॉज थोड़ा सा मूड को लिफ्ट अप करने के लिए। एंड दिस रियली हेल्प्स मी, बिकॉज व्हेनेवर आई डिड दैट
some DIY kind of stuffs that makes me feel like really happy. So yes, that's it for today's video. I hope this video will help for you, and if you love to watch these kind of videos, then don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell icon for more of such videos. Till then, bye. See you in the next video.